गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। यूनिफाइड 11th वीक एंड लिविंग द हार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के स्वाध्याय सीरीज में चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आइए 2 मिनट के लिए अपनी बिखरी हुई ऊर्जाओं को समेटते हुए आराम से बैठते हैं और अपने हृदय स्थान पर केंद्रित होते हैं। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें। ध्यान अपनी स्वाभाविक सांसों पर। शांति से बैठते हुए विकार भाव में आते हुए just relax and be with your breath। अपनी स्वाभाविक सांसों के साथ जुड़ते हुए अपने हृदय स्थान को महसूस करते हुए अपना ध्यान अपने हृदय स्थान पर केंद्रित कर लें। हृदय की कोमल स्पंदन को महसूस करें। इस सप्ताह हमने स्वाध्याय में इसी स्थान को जीवन और सशक्त बनाया है। यही संपूर्णता का स्थान है। यही सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता का स्थान है। इस प्रकार हृदय केंद्र में स्थापित होते हुए आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। स्क्रीन पर बुक का पीडीएफ शेयर किया हुआ है, उसे आप पढ़ भी सकते हैं और साथ साथ सुन सकते हैं। सो वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स। यूनिफाइड सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11th वीक एंड लिविंग द हार्ट। गॉड knows everything. Every law of nature is part of that thought of God which created everything. The interaction of molecules, the seasons, the states of physical matter, the spiritual worlds, gravity and time, the nature of love, the purpose of mankind, the balance of nature, galaxies, and so on. And on and on. God knows it all. He knows it consciously. That is, it is His thought that contains all knowledge. By now, you know the logical extension of God's omniscience. You also know everything. You are the one and same thought. Everything in that thought is there for you to know and think. You only need to tune into that thought and ask whatever you want to know. How silly it is then that you make mistakes. How silly it is to wonder what course of action is in your wisest interest.
The answers are all there. There is no need to guess or fumble. Suffering of any kind arises only when you aren't tapped into that knowledge. Suffering results from mistakes, and mistakes are not taking and using the knowledge that is yours. You miss the take, mistakes. So फ्रेंड्स, यहाँ पर बाबा जी बताते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है और जो कुछ भी यहाँ हम आसपास अपने देखते हैं, सृष्टि की रचना ईश्वर के जिस विचार से हुई है वह सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता का ही विचार है और उसी का लॉजिकल एक्सटेंशन, यानी कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हूं तो मैं भी सब कुछ जानती हूँ, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता का हकदार है। लेकिन फिर कितना बेवकूफ पना लगता है कि हम गलतियां करते हैं और वो मिस्टेक्स को यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। व्हेन वी मिस द टेक, मतलब कि जो हमारे आसपास जो ज्ञान है, जो हमें जिस प्रकार की चॉइसेस करनी चाहिए उस सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता के चलते हम जब वैसा नहीं करते हैं तब वो मिस्टेक होती है और तब हम सफरिंग लेते हैं, यानी कि हमारा दुखी होना या पेन जो आता है हमारे जीवन में वो इसीलिए आता है क्योंकि हम उस सर्वज्ञ ज्ञान, उस सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता में टैप इन नहीं कर पाते हैं। दैट इज, वी मिस द टेक इज इक्वल टू mistakes. Now there is no excuse for errors or suffering or simply not living your life to the fullest. You know your origin and you know you share in God's all knowingness. तो अब जबकि हम जान चुके हैं कि हम स्वयं ही उसी विचार के ही हकदार हैं, तो अब मिस्टेक्स का कोई स्कोप ही नहीं है, एक्सक्यूजेस का कोई स्कोप नहीं है। एंड फर्दर मोर, नाउ यू आर इन ट्यून विद योर हायर सेल्फ and that source of all knowledge. With such awareness, every impulse of yours is naturally correct and perfect to bring you experiences filled with all of God's qualities. You may not intellectually understand everything there is to know. The intellect is such a small part of you. It's in your head, while the connection to all intelligence is in your heart. In your heart, you know what you are doing is right, even though your intellect may not understand and may even argue against it. The intellect is limited to the sum total of your experiences since you separated from your higher self. The intellect assumes that you are a separate and lone being. That's fantasy. What your head can tell you is based on a fantasy. The heart doesn't deal in fantasy. तो यहाँ पर अब हम जान चुके हैं और अब हम अपने हायर सेल्फ के कांटेक्ट में भी हैं, हम अपने हायर सेल्फ से कम्युनिकेशन में भी हैं। तो अब हमें जिस प्रकार के अनुभव लेने हैं वो हम ईश्वरीय विचारधारा के चलते उसी प्रकार के अनुभव पा सकते हैं। लेकिन हमारे इंटेलेक्ट और हमारे हार्ट के बीच क्या डिफरेंस है कि इंटेलेक्ट से हम केवल एक स्मॉल अमाउंट में ही, स्मॉल इंफॉर्मेशन को ही, यानी कि एक लिमिटेड तरीके से हम समझ पाते हैं, जबकि हमारे हार्ट जो है वो फैंटेसी में डील नहीं करता। हमारा इंटेलेक्ट इमेजिनेशन में डील करता है, फैंटेसी में डील करता है, लेकिन हमारा हार्ट उस ऑल नोइंग इंटेलिजेंस का कनेक्शन है, वही सोर्स है और वही हमें सही एक्शन के लिए
अ, हर प्रकार के हैप्पीनेस, ब्लिस, जॉय, जो भी हमने क्वालिटीज गॉड के साथ एसोसिएट की, उस सब का सोर्स कहाँ पर है? हमारे हृदय स्थान पर। तो दैट इज द कनेक्शन टू आवर हायर सेल्फ, आवर होल सेल्फ एक्चुअली। जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि हायर सेल्फ, लोअर सेल्फ तो हम सिर्फ समझाने के तौर पर बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वी आर जस्ट वन सेल्फ, एंड दैट वन सेल्फ is connected to us with our heart center. So, when we talk of the head or the intellect, it is just a limited kind of understanding जो हमारे भौतिक जगत के अनुभवों पर बेस्ड है। लेकिन हार्ट जो है वो हमारे होल सेल्फ के ऊपर बेस्ड है, और वो हमें वापस हमारे उस एकीकृत क्षेत्र की ओर ले जाने में हमारी हेल्प करता है। That's why the emphasis this week is on enlivening your heart. The first day this week, you are to write out a creating formula to do just that. The claim section is simply: I claim now that I enliven and empower my heart to bring me my all knowing intelligence. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस हफ्ते हम अपने हार्ट को एनलिवन यानी कि उसे वापस जीवंत और सशक्त करते हैं। यानी कि कुछ प्रभावों के चलते हमारा हृदय उस एनर्जी में नहीं रहता जिससे कि हम अपने होल सेल्फ की सारी जानकारी हासिल कर पाए। तो उसे वापस वो पावर देना, वापस उसको वो लाइफ देना, वापस उसे इतना एम्पावर कर लेना कि वो फिर से हमें ऑल नोइंग इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट कर पाए। ये प्रैक्टिस हम इस वीक में करते हैं। Use your quiet period today to discover what thoughts you have that inhibit your heart from opening up to all knowledge. Deal with those thoughts in the fourth section of the formula. तो हमने जो प्रीवियस चैप्टर में क्रिएटिंग फॉर्मूला में 7 स्टेप्स सीखे, उसी में हम जो फोर्थ स्टेप है थॉट्स विद, उसमें हम उस प्रकार के विचारों पर कंसंट्रेट करेंगे जो विचार हमें हमारे हृदय स्थान के साथ उस कनेक्शन को स्थापित करने में बाधा डाल रहे हैं, या हमें सर्वज्ञ ज्ञान की ओर जाने में बीच में उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कि दे आर इनहिबिटिंग अस एक्चुअली। तो ऐसे कौन से विचार हैं? ऐसा विचार जैसे आपको हमने फर्स्ट चैप्टर में भी हमने रीड किया था कि जब हम भौतिक जगत में होते हैं तो हमारे लिए ये मानना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम ईश्वर की छवि में बने हैं। तो इस प्रकार के बड़े सूक्ष्म स्तर पर हम अपने विचारों को नोट करेंगे कि कौन से ऐसे विचार हैं जो मेरे हृदय को सार्वभौमिक ज्ञान की तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं, और उन थॉट्स को हम रिप्लेस करते हैं विद द थॉट्स दैट एक्चुअली हेल्प अस। तो जैसे हमने फोर्थ स्टेप में किया था कि आई हील एंड रिप्लेस द थॉट्स, वो वाली लाइन के साथ हम ऐसे विचारों को ठीक करते हैं, स्वस्थ करते हैं। आफ्टर यू हैव written out your creating formula from your heart, become comfortable and familiar with each section. You want to repeat it easily without the paper at least once each day this week. Remember to be centered in your heart when you say or think the formula. Feel the truth as you think each section. The second and every other day this week is your time now to practice a new tool for tapping into that all knowing intelligence. This new tool is a kinetic signal from your higher self for a yes and a no. Actually, you may already have such a signal. A chill up the spine when you're about to say or do something evil or inappropriate is common. Some people experience sweaty palms or a twitch someplace. These could be various forms of signals from your higher self. You may not remember any now,
But as you become familiar with signals, some will dawn on you. So, this is the second step this week, that we will be comfortable with a yes and no signal. यहाँ पर फ्रेंड्स हमें अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछने हैं कि हम यस या नो के क्वेश्चंस पूछें। सिर्फ और सिर्फ अपने कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने हायर सेल्फ के साथ हम कंफर्टेबली ये रिएक्शन देखें कि यस पर क्या सिग्नल होते हैं और नो पर क्या सिग्नल होते हैं, और अपने बॉडी में किसी भी प्रकार की कुछ मूवमेंट अगर होती है, ये गतिज संकेत होगा आपको, तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ फीलिंग होगी। तो यहाँ पर बाबा जी कहते हैं कि एक्चुअली आपको ऐसे सिग्नल्स आते भी हैं, लेकिन हम उसके प्रति जागरूक नहीं होते। कुछ लोगों को फील होते भी होंगे, कुछ को पता भी होगा, लेकिन अभी अगर हम पूछेंगे तो शायद उनको वो अभी याद ना आए। लेकिन जब आप किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां पर कि आपको एकदम से हथेलियों में पसीना आ जाता है, या कहीं कुछ हाथों में ऐसे हो जाता है कि कहीं पर कुछ मरोड़ जैसा, या रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कुछ ठंडक महसूस होना, जब ऐसे कोई घबराहट वाला या कोई कुछ गलत चीज या इनअप्रोप्रिएट चीज आपके पास आसपास है, तो इस प्रकार के अनुभव होते तो हैं, लेकिन हम उनको उस टाइम फील करते हैं, पर अभी रिकॉल शायद आप ना कर पाए, या अगर जागरूक हैं तो आपको एहसास हो भी गया है कि आप उनसे और ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे जब अब हम कॉन्शियसली उसकी प्रैक्टिस करेंगे। You are in charge of what signals you want. Always remember that. You are not a victim to any particular signal. तो आपको जैसा भी सिग्नल चाहिए, वो आपकी मर्जी से वैसा सिग्नल आपको मिलेगा। यस का सिग्नल या नो का सिग्नल, अगर आपको उसमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप दूसरा सिग्नल ले सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले अगर आपके लिए वो सिग्नल सही नहीं होगा तो आपका हायर सेल्फ आपको दूसरा सिग्नल देगा। तो इसलिए पेशेंस रखें और अपने सिग्नल्स के प्रति जागरूक रहें, सतर्क रहें। If you feel it is too obvious to anyone watching, or if it hurts, or if you just don't like it, you can tell your higher self to give you a new one. This is true with all signals, even the main signal from your higher self, as well as the new yes and no signals you will learn this week. Now, sit comfortably with your head and spine very vertical. तो यहाँ पर प्रोसेस बताया जा रहा है जो हम आगे अभी मेडिटेशन में करेंगे। आप ये प्रोसेस अच्छे से समझ लें ताकि आप जब ध्यान में बैठें तो आप बिल्कुल ट्रांस में ना जाएं, पर आप कॉन्शियसली अपने यस और नो सिग्नल्स की प्रैक्टिस कर पाएं। Settle down with your attention in your heart. Get your higher self signal and communicate for as long as there is the feeling to do so. Then say, Dear, take the name of your higher self, my higher self. Please give me a yes signal by rotating my head from right to left 3 times. Sit easily with your head as though it was sitting on a pivot. Don't resist any movement. Let it gently swing to the left and then back to the point of beginning. It will repeat this 3 times and your higher self signal will return. Practice this yes signal several times. When you feel comfortable with the yes signal, say, Dear my higher self, please give me a no signal by rotating my head from right to left once. Then relax again and allow your head to rotate to the left and return to its original position. Practice this signal several times. Each day, practice the yes and no signals by demanding the yes and then the no. Mix them up. This week is only to practice the signals.
For now, don't ask questions that are to be answered by the signals yet. Just get them strongly perfected so you can read the yes and no easily. Feel so comfortable with them that you can have no doubts about the process. तो इस हफ्ते फ्रेंड्स आपको इन सिग्नल्स के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाना है कि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए. If another signal comes instead of the rotating head, and if you like that signal, go with it. Your higher self may know that another type of signal is better for your physiology. Again, if you can't stand your yes or no signal, you can demand a different one. Don't, however, demand different signals just to test the process. Tests of this type do not work. It will just make you vulnerable to doubts. So, friends, पूरे विश्वास के साथ, फेथ के साथ इस प्रोसेस को आपको करना है और अपने यस और नो सिग्नल्स की प्रैक्टिस करनी है. सिर्फ टेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसे ना करें. अदरवाइज आपको और ज्यादा डाउट्स होंगे और आप उस प्रोसेस का जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा. तो यहाँ पर अगर हमें यस और नो सिग्नल्स की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, इसका मतलब आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें क्वेश्चंस भी आएंगे, हम उनके आंसर्स भी ढूंढेंगे. और बाबा जी यहाँ पर ये लाइन बिल्कुल क्लियरली लिखते हैं कि अगर आपको रोटेटिंग द हेड का सिग्नल, अगर आपकी फिजियोलॉजी आपकी बॉडी के हिसाब से ठीक नहीं है, तो आपका हायर सेल्फ जानता है. वो जानता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है. तो उस विश्वास के साथ जब आप चलेंगे तो आपका हायर सेल्फ आपको एक बेटर सिग्नल देगा जिसको कि आप एक्सेप्ट कर लें. लेकिन अगर फिर भी आपको आ, उसको टॉलरेट करने में प्रॉब्लम हो रही है या आपको वो ठीक नहीं लग रहा है, तभी आप अपने हायर सेल्फ से दूसरा सिग्नल डिमांड कर सकते हैं. सिर्फ प्रोसेस को टेस्ट करने के लिए आप ऐसी डिमांड ना रखें. Throughout the week, simply be aware that your heart is opening. Trust your feelings, act on them. You're creating formulas and living and empowering your heart. This is the connection to God's thought, which is all knowledge. Its input will be in the feelings of the heart. Enjoy it. तो एवरी वीक जब भी हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एंजॉय करते हुए चलना है. किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रखनी, कोई डाउट नहीं रखना. और आपको ये महसूस करते हुए चलना है दैट माय हार्ट इज एक्चुअली ओपनिंग अप. और अपनी फीलिंग्स पर ट्रस्ट रखना है और अपने एक्शंस में भी ये महसूस करना है कि आपका हृदय जीवंत और सशक्त हो रहा है. और ये सारा प्रोसेस ईश्वर के उस विचार के साथ कनेक्टेड है जिससे हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स मेडिटेशन नाउ. थैंक यू मैम. आनापानसति ध्यान के लिए स्थिति लेंगे. आराम से बैठें. फिंगर्स को क्रॉस करके गोद में रख लें. पैरों को क्रॉस कर लें. यदि चश्मा लगाते हैं तो चश्मा उतार कर रख लें और अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें. हृदय स्थान पर केंद्रित होते हुए ध्यान ले जाएं अपने हृदय के कोमल स्पंदन पर. Just feel the vibrations at your heart center.
This is the center for unifying with God. Think of God's qualities and accept them to be your own. ईश्वर की सभी विशेषताओं को अपना मानते हुए, ये जानते हुए कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ या बना हूँ। अपने हृदय स्थान पर जुड़े रहें। कंफर्टेबली, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। Keep your eyes closed and focus on the love pulsating from your heart to all of creation. Just feel God's love pulsating from your heart. Let us
clear our aura by repeating the lines that we have learned. To all the uninvited influences in my aura, I send you love and light. You are each whole and healed. You are each created as love and light, and you are still love and light. You each feel no pain, and you are not afraid. Each of you has a perfect place to go, and I ask my higher self to take you to that place. Now, each of you go in peace. Now, send light to all the thought forms around you.
I close my aura to all except for my higher self. And now receive the signal from your higher self and start your communication. My dear higher self, please give me your signal. Now, whatever communication you receive from the higher self, incorporate it into your creating formula. God and I claim and accept thoughts with forgiveness and thanks. Amen.
God and I claim and accept thoughts with forgiveness and thanks. Amen. For this week, repeat the formula God and I. Claim now that I enliven and empower my heart to bring me my all knowing intelligence. And I accept now that I enliven and empower my heart to bring me my all knowing intelligence. And now ask your higher self to feed you knowledge of the thoughts that keep you from your claim to enliven and empower your heart to all knowing intelligence. And once you realize the thoughts that hinder your claim, feel the thoughts and release them and replace them. I heal and release all thoughts I may have that interfere with this claim, known or unknown, conscious or subconscious. My thoughts are now one with the same as
and in tune with God's thought. My heart is in a state of forgiveness. I thank God for enlivening and empowering my heart to bring me my all knowing intelligence. Amen. Tathastu. I release this claim to God and to the natural laws of creation. My claim is now creative. That is the nature of natural law. Amen. What's your yes signal by asking your higher self to rotate your head from right to left 3 times.
Practice the no signal by asking your higher self to rotate your head only once. Trust yourself. Trust your feelings. Simply be aware that your heart is opening. Don't ask questions as yet. Just accept. Have faith and act on your feelings. Enjoy your connection to God's thought, which is all knowledge. Give few words of thanks to your higher self for its guidance and love. Heartfelt gratitude to Mahastar Babaji. Mahadi Parashakti. Heartfelt gratitude to Brahmrishi Pitama Patriji and to all the great masters in this group, all the divine masters. Thank you to the group consciousness. Thanks to your divine will to be unified. Thanks to your dedication and commitment.
Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly open your hands and put your palms on your eyes. Open your eyes within your palms. And with a beautiful smile on your face, put your hands down and you can come out of meditation. Thank you so much, friends, for a wonderful Swadhyay and meditation.